एंटी एरिथमिक ड्रग्स आज करेंगे। मिनी कैटजिंग से चैप्टर नंबर 14 है और ये चैप्टर फार्माकोलॉजी में एक मुश्किल चैप्टर माना जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स इसको काफी टफ समझते हैं। रीजन उसका ये है कि उसको हैप्पैज़ार्ड अप्रोच करते हैं। सो विल ट्राई टू मेक इट वेरी सिस्टमैटिक ताकि आपको आसानी से बात समझ में आए। ठीक है, अच्छा, एंटी एरिथमिक पढ़ने से पहले मेरा आपको सजेशन ये है कि गो रीड के एरिथमियाज होते क्या हैं। सो मेरे फिजियोलॉजी के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप मेडिकल फिजियोलॉजी मेरी गाइटन की प्लेलिस्ट अगर देखेंगे तो उसमें आपको एरिथमिया का चैप्टर कार्डियोवास्कुलर सीरीज में मिल जाएगा। तो मेरा सजेशन ये कि पहले थोड़े एरिथमियाज को पढ़ लें ताकि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरिथमियाज पता हो और नॉर्मल हार्ट बीट पता हो। सो अगर कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी पूरी पहले पढ़ लो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जो एरिथमिया वाला चैप्टर है, मैं लिंक दे देता हूँ उसका, वो तो जरूर ही पढ़ लेना, ताकि अगर एरिथमिया पता होगा तो एंटी एरिथमिक ड्रग कैसे काम करती हैं वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वरना मैं तो ये चैप्टर भी पढ़ा दूंगा, आप पढ़ भी लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट और आपकी एक्चुअली जो कंटेंट बिल्डिंग होती है ना मेडिसिन में, वो होती है ओवर द लेयर्स। यानी अगर आप एनाटॉमी बहुत अच्छी आपने पढ़ रखी है, उसके बाद उसको आपने लेयर अप किया है फिजियो के साथ, उसको आप लेयर अप करें बायोकेम के साथ एंड देन गो टुवर्ड्स फार्मा एंड मेडिसिन, तो ये बहुत अच्छा सा आपका एक पूरा बंडल बन जाता है। अगर आप सिर्फ डायरेक्ट मेडिसिन को जंप करते हो, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, या डायरेक्ट फार्मा समझने की कोशिश करते हो, पीछे फिजियो एनाटॉमी भूल के आते हो, तो बात वैसे बनती नहीं है। सो ट्राई गो रीड माय चैप्टर ऑन एरिथमियाज फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट से एंड देन कम टू दिस चैप्टर। ओके, now cardiac arrhythmias are the most common cause of death. Look at this statement. Now you have an idea how important this chapter is, and this is not the most common cause of death overall, but in those patients who have myocardial infarction or terminal heart failure, because once the heart start failing या heart का कोई एक segment अगर dead होता है तो MI की वजह से, यहाँ इस damage segment की वजह से arrhythmias can generate. They increase the prevalence in the elderly and atrial fibrillation is particularly common in elderly age group. यानी एट्रिया में fibrillation normal से हटके beat start हो जाती हैं. Arrhythmias are also the most serious manifestation of digitalis toxicity. So digitalis use के साथ भी arrhythmias बड़े ही commonly associated हैं, and often they are associated also with anesthetic procedures, hyperthyroidism, as well as electrolyte disorder. So these are all very common conditions. If you look at them, अगर कोई बंदा एनेस्थीसिया या किसी तरह की सर्जरी में जा रहा है तो ये arrhythmias can be precipitated. Hyperthyroidism is not uncommon in the society. Also electrolyte disorder. So all these can precipitate the arrhythmias. Okay, the drugs for arrhythmias fall into 5 major groups. अब यहाँ से बात स्टार्ट हो रही है कि एंटी एरिथमिक ड्रग्स को आप 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जो अपफ्रंट इन्होंने यहाँ बताए भी हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 5. But most have very low therapeutic indices, and when feasible, non-drug therapies such as cardioversion, pacemakers, ablation, implanted defibrillators are used. So that's an important point कि एंटी एरिथमिक ड्रग्स जो हैं उनका थेराप्यूटिक मार्जिन को बहुत ज्यादा, उनका थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत हाई नहीं है. दे हैव नैरो थेराप्यूटिक मार्जिन्स, जिसका मतलब ये है कि इनकी यूजेबिलिटी कोई बहुत हाई फाई नहीं है. सो अल्टीमेटली इन मेनी ऑफ द केसेस इट इज अ चॉइस कि यू हैव टू गो टुवर्ड्स अ नॉन ड्रग थेरेपी. नॉन ड्रग थेरेपी का मतलब ये है कि अब आप ड्रग नहीं दे रहे बल्कि कुछ फिजिकली कर रहे हैं पेशेंट के साथ. फॉर एग्जाम्पल कार्डियोवर्जन, सो यू आर यूजिंग लिटरली डिफिब्रिलेटर्स, पेसमेकर्स, एब्लेशंस. सो ये आपको आइडिया होना चाहिए फ्रॉम द वेरी आउटसेट ऑफ द चैप्टर. बट ये चैप्टर इजी है अगर कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़ो. अब तक मैंने एंटी एरिथमिक से मुतालिक एक बात आई हैव गिवन अवे, और वो ये कि एंटी एरिथमिक के कितने ग्रुप्स हैं टोटल? 5 ग्रुप्स. ठीक है, अब आप इनके नाम याद करें. पहला ग्रुप है सोडियम चैनल ब्लॉकर, एंड उस ग्रुप की ऑब्वियसली आपको एग्जांपल, हर ग्रुप की एग्जांपल याद करनी होगी. सो ग्रुप 1 की एग्जांपल है प्रोकेनामाइड, व्हिच इज अ सोडियम चैनल ब्लॉकर. नाउ इफ आई से सोडियम चैनल ब्लॉकर, मैंने आपसे कहा ना फिजियोलॉजी पे ये लेयर अप है फार्माकोलॉजी की. सो सोडियम चैनल ब्लॉकर में अब आपको बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि आपके हार्ट की जो सेल्स हैं उनमें सोडियम चैनल का रोल क्या है. सो यू नीड टू नो अबाउट द साइनोएट्रियल नोड, यू नीड टू नो हाउ डीपोलराइजेशन हैपन हियर, यू नीड टू नो कि सोडियम करंट जब जनरेट होता है तो हाउ द डीपोलराइजेशन वेव स्टार्ट्स. ये सब आपको तब पता होगा जब आपने मेरी फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट देखी होगी, और आपको ये मालूम होगा कि हाउ द पेसमेकर ऑफ द हार्ट, व्हिच इज द साइनोएट्रियल नोड, एक्चुअली जनरेट्स द रिदम.
अगर ये नहीं पता तो आपको सोडियम चैनल का कुछ कख नहीं पता कि सोडियम चैनल क्या काम करता है, तो सोडियम चैनल ब्लॉकर का सिर्फ नाम याद करके रट्टा मार के को बात समझ भी नहीं आएगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं पहले फिजियोलॉजी को ढंग से पढ़ें, फिर फार्मा की तरफ आइए, तो मेडिसिन तो आपके लिए हलवा हो जाएगी, बिकॉज आपको बेसिक प्रिंसिपल्स आते होंगे फिजियोलॉजी से, ड्रग्स का आपको पता होगा, पैथोलॉजी कंबाइन कर लें, ये बन गई मेडिसिन, है ना। सो मेडिसिन में यही है ना कि यू नो द डिजीज एंड हाउ टू ट्रीट द डिजीज, बट यू शुड नो द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द डिजीज। तो अब जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको यहाँ दी है ना कि सोडियम चैनल ब्लॉक करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, ये उसी वक्त समझ में आएगा जब आपको एक्चुअली सोडियम चैनल का और सोडियम एंट्री का इफेक्ट पता होगा। बिल्कुल इसी तरह ग्रुप 2 ड्रग्स जो हैं, दीज आर बीटा ब्लॉकर्स। अगेन ये इनफ नहीं है इंफॉर्मेशन याद रखना कि ग्रुप 1 सोडियम ब्लॉकर है, ग्रुप 2 बीटा ब्लॉकर है, इसकी एग्जांपल एस्मोलॉल है। भाई बीटा ब्लॉकर हार्ट में करेगा क्या, ये जाके बीटा एड्रेनर्जिक चैनल्स को ब्लॉक करेगा। अब बीटा एड्रेनर्जिक चैनल्स हार्ट में क्या करते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग होगी तब ये ग्रुप समझ में आएगा। Then there are group 3 which are potassium channel blockers, amiodarone and dofetilide. Examples हैं, group 4 is the calcium channel blocker, verapamil, typical one, and group 5 are some miscellaneous groups of drugs जिसमें काफी सारी चीजें involved हैं, including adenosine, potassium, magnesium. These are all also used as antiarrhythmic. So 5 groups हैं, sodium blocker, बीटा ब्लॉकर, पोटेशियम ब्लॉकर, कैल्शियम ब्लॉकर, और यही मेजर प्लेयर्स हैं हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के। अगर आपको याद हो ये सब चीजें, तो सोडियम का बड़ा रोल है, कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन में क्या रोल प्ले करता है, इवन इन द प्लेट्यू फॉर्मेशन ऑफ द डीपोलराइजेशन इन कार्डियक मसल्स, एंड पोटेशियम का क्या रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सिंपैथेटिक इनर्वेशन। इन्हीं की गड़बड़ी से एरिथमियाज हो सकते हैं, और इन्हीं को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो एरिथमियाज रुक सकते हैं। ऑल इज लिंक्ड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी में कार्डियक फिजियोलॉजी अगर ढंग से पढ़ के आओगे, डीपोलराइजेशन साइकिल पूरा पढ़ के आओगे, एरिथमियाज पढ़ के आओगे, तो ये चैप्टर आपके लिए फिर कुछ भी नहीं बचता यार। It's very easy then. Okay. Now the pathophysiology. Nature of arrhythmias. Normal electrical cardiac function, which is the normal sinus rhythm, जिसको हम NSR भी कहते हैं, is dependent on generation of an impulse in the normal sinoatrial node. Now you know this from the physiology, which is also called the pacemaker of the heart, and its conduction through then the atrial muscle, through the AV node, and through the Purkinje system to the whole heart itself. Okay, so sinoatrial node में impulses generate होंगी, they travel down, there is an AV node, they travel down Purkinje fiber to the whole heart. That's how it happens. Okay, a new impulse must arise in the sinoatrial node for the next conducted action potential. So it is again and again depolarized, and the action potential or the wave of depolarization passes through the heart with every beat. Normal pacemaking and conduction require normal action potentials under appropriate autonomic control, which is the beta supply. Arrhythmias, also called dysrhythmias, are therefore defined by exclusion. That is, an arrhythmia is any cardiac rhythm that is not normal. Okay, if it happens in the atria, atrial arrhythmia, ventricular arrhythmias, there are different types then. Abnormal automaticity and abnormal conduction are two major mechanisms of arrhythmia. देखें, नॉर्मल आपके हार्ट में साइनोएट्रियल नोड इज द प्लेस जहां पे डीपोलराइजेशन वेव जनरेट होती है। सो दैट्स द पॉइंट जहां पे सारा हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मैसेज जनरेट होता है। लेकिन सपोज किसी और कोई फोकस बन जाए, वेंट्रिकल में यहाँ एक फोकस बन गया सपोज, और ये जो वेंट्रिकुलर फोकस है ये अब बीटिंग स्टार्ट कर दे और पूरा हार्ट इसके कंट्रोल में आ जाए। नाउ दैट इज कॉल्ड चेंज इन ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिसिटी शुड बी द फिनोमेना ऑफ साइनोएट्रियल नोड, बट इफ it starts happening at some other point, that is change in the focus of automaticity. और कंडक्शन पाथवे, अब होता ही है कि नॉर्मल पाथवे ये है कि साइनोएट्रियल नोड, देन एट्रियल बंडल, एंड देन एवी नोड, एंड देन पुर्किंजे। इसके अलावा अगर कहीं से मैसेजेस गुजरना शुरू हो जाएं या कोई एबनॉर्मल कंडक्शन पाथवे हो, ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं एरिथमिया के, एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी एंड एबनॉर्मल कंडक्शन. Okay. Now, a few of the clinically important arrhythmias are atrial flutter. It arises in atria, atrial fibrillation, atrioventricular nodal re-entry. ये सब हम पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजी के चैप्टर में. So, गाइडेंस से मैंने ये सारे आपको पढ़ाए. ventricular tachycardia, VTAC या VFib. Examples of electrocardiographic recording of normal sinus rhythm, ये हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे because we have done this all in great detail in physiology. Torsades, de Point, Long-Curie syndrome, we have done this all. So again, देखें मैंने start में जो बात आपसे की थी कि go watch my physiology lecture. That is the basis of understanding this particular
टॉपिक इन फार्माकोलॉजी। मैं बार बार कह रहा हूँ, होता ये है कि बच्चे ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इतनी सी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं जिस पर मेरी पूरी 1 घंटे की एरिथमियास पर वीडियो अवेलेबल है। वो वीडियो देखो यार, इस 2 पैराग्राफ से बात समझ में आएगी नहीं, कंफ्यूज हो गए। ठीक है ना। नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द कार्डियक सेल, द सेलुलर, अब ये एक्शन पोटेंशियल भी अगेन फिजियो का टॉपिक है जो हम पढ़ चुके हैं। The cellular action potential shown is 14.1 are the result of the, actually again I'm not going to go into the details, we have done this in great detail, go watch my physiology lecture is all I have to say here, okay? कि L type calcium channel कब खुलते हैं, पोटेशियम फनी करंट्स, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं। सो प्लीज वो देखें यार जाके, तो आपको पता लगे कि Q R S T P ये सारे वेव्स क्या हैं। ECG हमने ग्रेट डिटेल में पढ़ रखा है। सो इट विल नॉट जस्टिफाई कि अगर यहाँ सिर्फ मैं 2 मिनट में इसको क्विकली बता दूं। यार मेरी पूरी वीडियोस हैं, पूरी प्लेलिस्ट कार्डियो वास्कुलर, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, कार्डियक स्टफ की भी, वास्कुलर स्टफ की भी। तो यार वो वॉच लिस्ट क्यों नहीं देखते हो, वो प्लेलिस्ट जाके देखो ताकि वो समझ में आ जाए, फिर इस चैप्टर पर आओ। ठीक है, अच्छा क्लासिफिकेशन पे आ जाएं, जो एंटी एरिथमिक आज का हमारा टॉपिक है। बेसिकली these agents are usually classified using a system loosely based on the channel or the receptor which is involved। और अभी हमने देखा था ना, ये जो ग्रुप 1 था, ग्रुप 1 was blocking sodium channel, then beta blocker, then potassium, calcium, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर भी वही दोबारा रिपीट किए हैं, सोडियम, बीटा ब्लॉकर, पोटेशियम एंड कैल्शियम। एंड ग्रुप 5 भी था विच वाज मिसलिनियस। ग्रुप 5 वाज मिसलिनियस ग्रुप जिसमें एडिनोसिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब मौजूद थे। ओके, अब एक एक करके इन्होंने हर ग्रुप की डिटेल्स दी हैं कि वो की एग्जांपल्स क्या हैं, वो किस तरह काम करते हैं। बट बिफोर प्रोसीडिंग टू डिफरेंट टाइप्स, हमेशा की तरह मिनी कैटजिंग फार्मा में एक टेबल इस तरह का होता है जिसमें हाई यील्ड टर्म्स होती हैं, एंड आई थिंक दीज आर इंपॉर्टेंट टू डिस्कस। रीजन उसका ये है क्योंकि अगर ये टर्म्स आपकी समझ में नहीं आई तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई। ओके, सो एबनॉर्मल ऑरोमैरिसिटी ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि पेसमेकर एक्टिविटी दैट ओरिजिनेट एनीवेयर अदर देन द साइनो। सो हार्ट का जो साइनो एट्रियल नोड था उसके अलावा आप कहीं पेसमेकर एक्टिविटी है तो इसे हम कहते हैं एबनॉर्मल ऑरोमैरिसिटी। एबनॉर्मल कंडक्शन का मतलब ये है कि जो नॉर्मल पाथवे ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स है या डीपोलराइजेशन वेव है, उसके अलावा अगर कोई पाथवे है दैट इज एबनॉर्मल कंडक्शन। एट्रियल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इट्स द एरिथमिया इन्वॉल्विंग रैपिड री-एंट्री एंड chaotic movement. So the atria or the ventricle are bizarrely contracting, not in a sinus rhythm, not in a controlled manner. अगर वो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन है तो A फेब, और अगर वेंट्रिकल की है तो V फेब। Now group 1 2 3 4 drugs, ये आपको पता है कि these drugs, a method of classifying antiarrhythmic drugs, sometimes called the Singh-Vaughan-Williams classification, is basically involved in identifying the receptor. So group 1 drugs, for example, block sodium receptors. Group 2, for example, block beta adrenergic receptors. Group 3 also block some receptor, and Group 4 also block some receptors. ये आपको पता है कि Group 3 is the potassium blocker and Group 4 is the calcium blocker. Okay. Now, re-entrant arrhythmias of abnormal conduction, they involve the repetitive movement of an impulse through tissue previously excited by the same impulse. So, उसमें re-entry circle में wave of depolarization घूमती रहती है. Go read my physio lectures. Effective refractory period is the time that must pass after the upstroke of a conducting impulse in an excitable tissue before a new. So अगर एक सेल है या टिश्यू है वो एक्साइटेशन फेज में है तो अगली डीपोलराइजेशन की वेव उस वक्त तक काम नहीं करेगी जब तक ये रिपोलराइज कंप्लीटली नहीं हो जाएगा। Selective depression, the ability of drugs to selectively depress areas of excitable membrane that are more susceptible, leaving other areas relative. So it's kind of self-explanatory. The vast part of the membrane will be depressed selectively and the others will not be affected. Supraventricular tachycardia, it's a re-entrant arrhythmia that travel through the AV node. AV node के ऊपर ये ऐसे घूमता रहता है इसलिए supraventricular है। और ventricular tachycardia is within the ventricle. A very common arrhythmia, often associated with myocardial infarction. Ventricular tachycardia may involve abnormal automaticity, abnormal conduction, and it obviously impairs the cardiac output because if anything other than normal is happening, then the heart will not be able to pump normal amounts of blood. So cardiac output will be affected. Okay. अब बात करते हैं एक एक करके एक एक ग्रुप ऑफ ड्रग की। सो ग्रुप 1 फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ग्रुप 1 में जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं विच ब्लॉक द सोडियम चैनल्स और प्रोकेनामाइड इसकी एग्जांपल है। सो द ग्रुप 1 ड्रग्स हैव लोकल एनेस्थेटिक एक्शन
and slow the upstroke of sodium dependent action potential. So sodium entry से obviously action potential होता है in the upstroke direction, so they stop that. Okay, and therefore they usually prolong the QRS duration. They further divided on the basis of their effects on the AP duration. और group 1A drugs जो हैं जिसकी example है procainamide, it prolongs the AP, and the group 1B drug जिसकी example है lidocaine, बड़ा commonly used local anesthetic है, आपको पता भी है ये बात. It shortens the AP in some cardiac tissues, especially the Purkinje fiber. And there is another group, group 1C, जिसकी example है flecainide. They have no effect on the AP duration. Now, that becomes an important discussion because अब हम बात कर रहे हैं further classifications की. So what we are talking about, see, ये आपको ना पूरा cardiac cycle पता होना चाहिए कि what's happening in the cardiac cycle. That is the wave of depolarization. So यहाँ depolarization हो रही है. That is the upstroke. Then there is a slight depolarization. Then that is the plateau. And this is where calcium ions are super duper important. This is where sodium ions are super duper important. So action potential का जो upstroke है, that is actually disturbed by using sodium channel blockers. So if you block sodium channel, action potential is going to be disturbed. One more time we should read this ताकि concept एक दफा fix हो जाए दिमाग में. The group 1 drugs have local anesthetic action because they are blocking sodium channel. तो जनरल इनका इफेक्ट है कि डीपोलराइजेशन को ये रोकेंगे. तो यूजुअली ये आप स्किन वगैरह पे लगाते भी हैं एज जनरल, नॉट जनरल, लोकल एनेस्थेटिक्स. ओके, एंड दे स्लो द अपस्ट्रोक ऑफ द सोडियम. सो बिकॉज अपस्ट्रोक वाज द जॉब ऑफ सोडियम, दैट इज स्लोड डाउन. ओके, और फिर इन ड्रग्स की फर्दर क्लासिफिकेशन है इनटू 1A, 1B एंड 1C, एंड दैट्स ऑल बेस्ड ऑन हाउ दे वर्क ऑन द एक्शन पोटेंशियल. सो जो ग्रुप 1A की ड्रग्स हैं, दे प्रोलॉन्ग द एक्शन पोटेंशियल. Group 1B की जो drugs हैं, they shorten the action potential in some cardiac tissues, not all of them. Or Group 1C do not affect the action potential because there are some other channels as well. It's not the only channel working. All Group 1 drugs slow conduction in ischemic and depolarized cells and slow or completely abolish abnormal pacemaker wherever these process depend on sodium channel. So because you are blocking sodium channel, you are kind of blocking the upstroke of the depolarization. तो अगर कोई ischemic area था हार्ट के अंदर और यहाँ पे सोडियम एंट्री एक्सेसिव हो रही थी और ये ischemic area जो है नया पेसमेकर बन गया था, अब आपने यहाँ पे सोडियम ब्लॉक कर दिया तो इसकी एक्टिविटी को आपने एक्चुअली ब्लॉक कर दिया. That's how you are stopping the arrhythmia. Now the most selective agent have significant effect on sodium channels in depressed cardiac tissues, but negligible effect on channels in the normal cell. That's the beauty because these are selective drugs, particularly group 1B, example being lidocaine. Now, in contrast, less selective, these are more general, so they kind of depress the overall activity of the normal cells as well. Useful sodium channel blocking drugs bind to their receptors readily when the channel is open or inactivated, and much less readily when it is. Well, this is too much detail. अगर आपको याद रखनी है रखें, नहीं रखनी तो भी it's okay. They are use dependent or state dependent in their action. Again, too much details. I would not worry too much about it. Okay. Alright. So, drugs with group 1A action. So, procainamide is group 1A prototype, and there are other drugs as well, obviously, including disopyramide and quinidine. These are all the group 1A drugs. So, other drugs in the group 1A include quinidine and disopyramide. Amiodarone, often classified in group 3, also has 1A action because it also tends to block sodium channels. Now these drugs affect both atrial and ventricular arrhythmias. They block the sodium की जो entry वाला upstroke वाला phenomena है depolarization का, and therefore they slow the conduction velocity in the atria, the Purkinje fiber, सब में slow कर देंगे. Group 1A drugs also block one or more repolarizing potassium. That's an additional benefit. And amiodarone has the similar. Amiodarone is not a typical group 1 drug, it's a group 3 drug, but it has an effect just similar to what group 1 drugs do because they block sodium currents. Okay, so this is what is blocked, the sodium current, and this is what is then affected because this is what is the sodium entry curve. Okay, right, these are the drugs name in group 1A, and PR interval increase or decrease depending upon which channels they are targeting. QRS का duration usually increase होता है and the QG interval as well. Reason ये है क्योंकि हर चीज़ अब slow हो जाती है, आप sodium entry block कर रहे हैं, so the whole QRS complex increases in its duration, right?
So this is a good diagram actually. It shows effect of group 1 agent. So this is all group 1 drugs. This is the area which they will block. They will block the sodium entry, and once the sodium entry is blocked, you see what's happening. There was a normal upstroke, now there is a delayed upstroke. You see this? There is a delayed upstroke. That's very very important. Okay, right. Itna concept aapko hona chahiye. If you don't understand this, then you are screwed up in your examination. Now drugs with 1B action. 1B or aapko remember the classification. If a drug is called 1A, it increases the action potential duration, and we talked about this in the very beginning. So 1A agents are those which prolong the action potential. 1B are those which shorten the action potential, and then 1C do not actually affect. So if you look at this diagram, say for example I'm talking about the red line. So जो red line है वो ये है, देखिए यहाँ से start हुआ upstroke जो कि normal से slow हो गया और action potential prolong हो गया. देखिए ये टाइम पीरियड जो है ना एक्शन पोटेंशियल का ये बढ़ गया. सो दीज आर ग्रुप 1 ड्रग्स. अच्छा, अब अगर मैं देखता हूँ से फॉर एग्जांपल द येलो लाइन. सो येलो लाइन में द एक्शन पोटेंशियल का ड्यूरेशन जो है वो एक्चुअली कम हो रहा है. सो इट्स रिड्यूसिंग. और जो थर्ड कैटेगरी थी ग्रुप सी ड्रग की, व्हिच इज सेम एक्शन पोटेंशियल. सो ये आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. व्हाट इज ग्रुप 1B, व्हाट इज ग्रुप 1C, व्हाट इज 1A. सो लाइडोकेन इज द prototype for 1B drug, and it is used exclusively by intravenous or intramuscular routes. Maxilidine is an orally active. I think this is the only one that I know is orally active in 1B group. These drugs selectively affect the ischemic or the depolarized potential. So that's a very good drug to use actually. Now, because they slow the recovery of the sodium channel from inactivation, 1B drugs do not shorten. They may even prolong the refractory period. तो काफी देर तक बिजी रखते हैं मसल्स को. देखो ये सारे मेरे जो वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ ना भाई, ये समझ में नहीं आएंगे आपके, और आप भी उन्हीं स्टूडेंट्स की तरह बन जाओगे कि यार एंटी एरिथमिक का टॉपिक बड़ा मुश्किल है, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स यूज कर रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल प्रोलॉन्ग हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल शॉर्टन हो रहा है. भाई ये सब तो होगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ा नहीं ना सही से तो समझ में आने नहीं वाली बात. तो फिजियोलॉजी को पहले पढ़ के आओ ताकि यहाँ फार्माकोलॉजी समझ में आए. ठीक है. Now, phenytoin, an anticonvulsant and not a true local anesthetic, is sometimes also classified as 1B drug because ये भी इन्हीं की तरह काम करता है. Now, 1C, flecainide is the example. Actually, this is the prototype. Other members of this group are used outside the USA, kind of prohibited in US at the moment. These drugs have no effect on ventricular action potential duration or the QT interval. So that's an important point for them. But इतना याद होना भी चाहिए यार. Now, pharmacokinetics, clinical uses and toxicities. There's a table summarizing all these things. So that's not this one. There should be another table. Where is it? Which table are they referring to? Let me have a look. At the end of the chapter. Okay, so we'll have a look at the end. Actually, you will have a look at the end yourself. Okay. Now, इनकी uses क्या हैं? So, group 1A drugs कब use होती हैं? Group 2 drugs कब use होती हैं? Now, you are getting a feel of what we are talking about. So, first we talked about कि group 1 drug हैं क्या? So, group 1 drugs जो हैं, basically they are sodium channel blockers. Then we talked about उनकी 3 types क्या क्या हैं? 1A, 1B and 1C. And इनमें क्या difference है? उनके prototypes के नाम क्या हैं? Now we are talking about कि drugs कब use होती हैं. So, 1A drugs जो हैं can be used in all types of arrhythmias, atrial as well as ventricular. And all of them are actually responsive to group 1A drugs. Quinidine and disopyramide have similar effects but are used much less frequently as compared to the procainamide. Procainamide is also commonly used in arrhythmias during the acute phase of myocardial infarction to prevent actually arrhythmias. Now, procainamide may also be used in they may cause, now the side effects, they cause hypotension, and chronic use may cause a reversible syndrome similar to the lupus erythematosus. Important side effects to remember. Quinidine causes synchronism, which is a complex of headache, vertigo, tinnitus, cause cardiac depression, GI upset. So there's a long list of side effects, all basically associated with sodium का blockage ज़्यादा हो गया. Sodium का blockage ज़्यादा हो जाएगा तो ये सब side effects आपको समझ में आने चाहिए. Hyperkalemia usually exacerbate the cardiac toxicity of group 1 drugs. So hyperkalemia is not a favorable thing for group 1 drugs. Okay, if there is hyperkalemia, treat this first before administering group 1 drugs. अच्छा, group 1B group 1A drugs. Group 1B drugs कब use करते हैं? Lidocaine is useful in acute ischemic ventricular arrhythmias, for example after the MI, because group 1B drugs जो हैं particularly they are selective for the ischemic tissue. So use them for MI patients. Okay, and side effects can be
local anesthetic toxicity, CNS stimulation, convulsions, these are common. And hyperkalemia, again, you see that was also a problem in group 1A drugs, is also a problem in group 1B drugs. Treat hyperkalemia before giving the drugs. And group 1C drug flecainide, आपको पता है कि इसका प्रोटोटाइप है, is effective in both atrial as well as ventricular arrhythmias, but it is approved only for refractory. Particular type है जो आपको याद रखनी है, किसमें ये important है, एग्जाम में ये पूछेंगे आपसे. Flecainide and its congeners are more likely than other antiarrhythmic drugs to exacerbate the arrhythmia's pro-arrhythmic effect. Flecainide and its congeners are more likely than other antiarrhythmic drugs to exacerbate or precipitate arrhythmia. So that's an important point to remember. कि देखिए, it's an anti-arrhythmic drug, but it also has the potential to, aggravate some other types of arrhythmias. So this is, very very kind of dangerous thing. क्योंकि आप एक anti-arrhythmic drug, ये ऐसे है जैसे आप anti-fever drug यूज कर रहे हो और उससे fever हो रहा हो, anti-diarrheal drug यूज कर रहे हैं और उससे diarrhea हो रहा हो, है ना? So this toxicity was dramatically demonstrated by a cardiac arrhythmia suppression trial, the CAST trial, a large clinical trial of prophylactic use of 1C. So people started using prophylactically 1C drugs, and they actually caused, arrhythmias. So the word of caution here, खामखा में नहीं use करनी है drugs. Hyperkalemia here is also a problem. Hyperkalemia increase the toxicity of these agents. So hyperkalemia is a dangerous thing for the use of group 1 drugs, all of them. So treat hyperkalemia first and then think about giving group 1 drugs, okay? So ये मोटी मोटी बातें थी जो आपको group 1 drugs के बारे में याद रखनी है. They are pretty simple to me, बस बार बार आपको इनको repeat करना है तो याद हो जाएंगी. Now let us talk about how do group 2 antiarrhythmic work. And group 2 is basically, remember, beta blocker. So in your head, think about what do beta blockers do to your heart. और जो भी beta blocker का effect होगा, ये drugs उस effect को रोकेंगे. ये basically वही beta blockers हैं जो beta blockers आप पढ़ रहे होते हैं और भी दूसरी जगहों पे cardiovascular drugs में. So propranolol, esmolol, they are the prototype antiarrhythmics used in group 2. And they are beta blockers, so you should know what beta blockers do, and that's what their job is. The mechanism in arrhythmias is primarily cardiac beta adrenoreceptor blockade by actually reduction in the cyclic AMP levels, which result in a modest reduction of both the sodium as well as calcium currents. So that's the overall package कि जब beta blockage आप करते हैं तो basically जो beta receptors हैं heart में वो block होते हैं by reduction in the cyclic AMP, by reduction in the sodium and the calcium influx. The AV node is particularly sensitive to beta blockers and therefore the PR interval is usually prolonged. So अगर आप AV node को block करोगे तो conduction through the AV node जो है वो slow हो जाएगी, which will lead to elongation of the PR interval. Under some conditions, these drugs may have some direct local anesthetic effect as well because they block sodium. Anything blocking sodium channel has a potential anesthetic effect. But this is probably rare in a concentration achieved clinically. Sotalol and amiodarone, generally classified as group 3, also have some group 2. तो अब आप देख ही रहे हो बात कि जो group 1 drugs हैं उसमें भी कुछ क्रॉस कंटेमिनेशन है दूसरे ग्रुप्स के ड्रग्स की. इसी तरह group 3 अभी कुछ मैंने आपके सामने नाम लिए, sotalol and amiodarone, they also have cross contamination with group 2 activity. So there is a overlap of activities between different groups of antiarrhythmic drugs, okay? Clinical user toxicities. Esmolol is a very short-acting beta blocker for intravenous administration, IV, याद रखने वाली बात है, and is used exclusively in acute arrhythmias. Propranolol, metoprolol, timolol, they are commonly used chronically to prevent arrhythmias in patients who have had MI. So MI का अगर patient है उसको long term में अगर आपने drugs देनी है, so these are the choices. Esmolol is actually routinely kept for acute arrhythmias. The toxicities of beta blockers are the same in patients with arrhythmias as in patients with other condition. यानी beta blocker के जो general side effects हैं जो पहले भी हमने पढ़े हैं जब हम drugs पढ़ रहे थे जो sympathetic system को block करती हैं, वही side effects इनके भी होंगे. So that is basically the same story. While the patients with arrhythmias are often more prone to beta blocker induced depression of cardiac output, because if you overdose them with beta blockage, so you are actually suppressing the heart और आप cardiac output actually decrease कर रहे हैं. That's the major side effect. अब बात करते हैं group 3
एंटी एरिथमिक ड्रग्स की विच आर बेसिकली पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, और इनकी जो ड्रग्स आपने याद रखनी है दे इंक्लूड डोफेचिलाइड एंड आब्यूटालाइड. दे आर टिपिकल ग्रुप 3 ड्रग्स. सोटेलॉल इज अ कायरल कंपाउंड, और इसमें बेसिकली देयर इज आल्सो सम ग्रुप 2 एक्टिविटी एज वेल. One isomer of sotalol is effective beta blocker indeed, or the other isomer, actually both the isomers are also potassium channel blocker. Therefore, they are included in group 3. क्योंकि इसके जो दोनों isomers हैं, the two optical isomers, both of them block the potassium channels, but one of them only block the beta channel. The clinical preparations contain both the isomers, इसीलिए they are effective group 3 drugs. Amiodarone is usually classified as group 3 drug because it blocks the same potassium channels and markedly prolong the action potential. Again, if you are blocking the potassium channel, तो repolarization cycle को disturb कर रहा है और action potential का size आपका बढ़ जाएगा. Okay? Now, dronedarone is similar to amiodarone, but it is less effective and also less toxic. काम भी कम करती है और तबाही भी कम मचाती है. ग्रुप 3 ड्रग्स का जो हॉलमार्क है वो है प्रोलॉन्गेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल. Obviously, if you are blocking potassium channels, then you are increasing the action potential time duration. That's the thing that you have to remember. Clinical use is because of high prevalence of AFib and their modest efficacy in this arrhythmia. Group 3 drugs are in common use. AFib is also the arrhythmia most often treated with percutaneous ablation, which is a non-pharmacologic type of treatment. But anyways, AFib is one of the most common indication to use group 3 antiarrhythmic drugs. अच्छा, अब ये heading जरा सुने. Amiodarone as a special case. Amiodarone is useful in most type of arrhythmias and is considered the most efficacious of all the antiarrhythmic drugs. सबसे अगर कोई efficient drug समझी जाती है तो वो amiodarone है. This may be because it has a broad spectrum of action. It blocks sodium, कैल्शियम एज वेल एज पोटेशियम चैनल्स एज वेल एज बीटा. तो आप जरा देखें ये एक्चुअली चारों क्लासेस को कवर कर रही है. इट्स ब्लॉकिंग सोडियम, सो ग्रुप 1 ड्रग. इट्स ब्लॉकिंग पोटेशियम, इट्स ब्लॉकिंग बीटा एड्रेनोरिसेप्टर, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, कैल्शियम, सबको कवर कर रही है. बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिसिटीज, हाउएवर, amiodarone is approved for use mainly in arrhythmias that are resistant to other drugs. अब जो इतनी ब्रॉड एक्टिंग ड्रग्स होती हैं उनका एक फायदा तो बहरहाल ये होता है कि वो हर ही जगह जाके ब्लॉक कर रही है, तो किसी भी तरह का एरिथमिया होगा वो कंट्रोल में आ सकता है. लेकिन फिर इसका एक डाउन साइड भी है. डाउन साइड ये है कि चूंकि इतना ब्रॉड एक्टिविटी है, स्पेक्ट्रम इतना ब्रॉड है, उसी तरह से साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा होते हैं. इसीलिए amiodarone इज यूजुअली कंसीडर्ड एज अ लास्ट रिजॉर्ट जब दूसरी ड्रग्स काम नहीं कर रही होती. Nevertheless, it is used very extensively off-label in a wide variety of arrhythmia. बहुत सारे clinicians anyways इसको use कर ही रहे होते हैं. Amiodarone causes microcrystalline deposits in the cornea as a side effect. Skin as well as thyroid dysfunction, hypo as well as hyperthyroidism, tremor, pulmonary fibrosis. Amiodarone rarely causes new arrhythmia, so this is not pro-rhythmic drugs like some of the other drugs are pro-rhythmic, and perhaps because it blocks calcium channels as well as beta receptors. Dronedarone and amiodarone analog is also approved. Like amiodarone, it acts on sodium, potassium, calcium channels, but at present it is approved only for the treatment of atrial flutter or fibrillation. तो ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए कौन सी ड्रग किस चीज के लिए अप्रूव्ड है. ठीक है, राइट. नाउ द ग्रुप 4 एंटी एरिथमिक. अच्छा, ये ग्राफ भी आपको समझ में आना इसलिए चाहिए बिकॉज सी दिस इज द प्लेट्यू थिंग ना. और अगर ग्रुप 3 ड्रग्स की हम बात कर रहे हैं विच आर पोटेशियम, तो वो रिपोलराइजेशन पे इफेक्ट करेंगी, और ग्रुप 4 ड्रग्स जो हैं वो एग्जैक्टली प्लेट्यू पर इफेक्ट करेंगी. सो बेसिकली ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको नॉर्मल कार्डियक फिजियोलॉजी पता है, क्योंकि ये कर्व सारे हमने वहां बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं. अच्छा, ग्रुप 4 ड्रग्स क्या करती हैं? दे ब्लॉक द कैल्शियम चैनल्स, और इनके प्रोटोटाइप्स हैं ये वही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जो आप ब्लड प्रेशर में भी यूज करते हैं. वेरापेमिल, diltiazem is also an effective drug. Nifedipine and other dihydropyridines are not useful as antiarrhythmic. It's the verapamil and diltiazem, not anything else. Okay. The later effect facilitates rather than suppress the arrhythmias. अब ये effect क्या है? देखें, उसका रीजन ये है, ये जो ड्रग्स है ना, नाइट्रोफिन वगैरह, they decrease the arterial pressure enough to evoke a compensatory sympathetic discharge. होता ही है कि इन ड्रग्स का काम है ना, nifedipine is going to reduce the blood pressure, और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर जब कम होगा तो रिफ्लेक्स बॉडी का ये होता है कि सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ जाता है. और हार्ट में अगर आप सिंपैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ा देंगे तो आप एरिथमिया के चांसेस एक्चुअली बढ़ा रहे हैं.
So that's why these drugs are not used, these two are used because उनका blood pressure lowering effect इनके मुकाबले में कम है. Verapamil and Indazim are effective in arrhythmias that must traverse calcium-dependent cardiac tissue such as the AV node. So that's calcium channel blockage basically at the AV node. Clinical usage: calcium channel blockers are effective for converting AV nodal re-entry arrhythmias to sinus normal rhythm. So that is the category in which they are used and recommended. Their major use is in prevention of these nodal arrhythmias in patients prone to reoccurrence. These drugs are available oral as well as parenteral use. So any drug which is available in multiple formulation is obviously a good choice. The most important toxicity of these drugs is excessive depression of the cardiac activity because आप calcium channel block कर रहे हैं, blood pressure बहुत ज़्यादा drop कर सकता है. So these are the common side effects, and they again the general common side effects which we see in the any other calcium channel blocker. So apart from these four groups, 1, 2, 3, 4, there is a fifth group which is known as the miscellaneous drugs. उसमें आती है drug adenosine. It's a normal component of the body. It's there in your body, but when given in high doses, such as 6 to 12 milligrams, as an intravenous bolus, the drug markedly slow or completely even block the conduction in the AV node. Wow, block the conduction. Probably by hyperpolarizing this and by reducing the calcium current. So potassium conductance increased and calcium entry stopped. Hyperpolarization, blockage of AV node conduction. Adenosine is extremely effective in abolishing AV nodal arrhythmias. So sometimes it is used as a bolus. Adenosine has an extremely short duration of action, about 15 seconds. Toxicities include flushing and hypotension. But because of their short action, the effects are, not something जिसकी वजह से आप drug use ही ना करें. Transient chest pain and dyspnea may also occur. So these are the side effects that you need to remember, and you should know कि ये high dose में सिर्फ effective होता है. It's not causing any problem because it is normal in the body. So ये normal amounts में आपकी body पर कोई anti-arrhythmic effect इसका नहीं है. But if it's used in very high dosages such as 6 to 12 mg, particularly as an IV bolus, then it goes and exerts its effect. Okay, so it's also sometimes used. Then potassium ion. But I would rather say that potassium ion should be used as very, as a careful therapeutic approach, because by disturbing the potassium levels, you are actually disturbing quite a lot of the cardiac activity. So potassium depresses the ectopic pacemakers, including those caused by the digitalis toxicity. So अगर हार्ट में साइनोएट्रियल नोड के अलावा कहीं भी और फोकस बना है फॉर रिदमिक डिस्चार्ज, पोटेशियम इसको suppress करेगा. That is the power of potassium. Hypokalemia is associated with increased incidence of arrhythmia. Conversely, excessive potassium depresses the conduction. So that is the important point that you should remember. कि potassium का high level slows down the conduction through the cardiac machinery. Now, the magnesium ion, abnormalities of magnesium concentration do not occur as frequently as hyper or hypokalemia. This is rather much common. Hypomagnesemia या hypermagnesemia इतना नहीं सुनते आप, because वो इतना common नहीं है. Intravenous administration of magnesium appears to have similar effects as was also induced by potassium. So it suppresses the cardiac machinery. Magnesium also appears to be effective in torsades de pointes. Hypermagnesemia may cause skeletal muscle weakness or paralysis as well. So this is sometimes used. Actually, I have not seen in my clinical career somebody using magnesium as an antiarrhythmic, but that's my personal experience. Okay. Ranolazine and ivabradine. These are newer agents. We'll discuss them separately. Actually we have done that. So go watch my video on chapter number 12. Then there are some, अब तक जितनी बात हमने की, they were all pharmacologic treatments. Now we are going to talk about non-pharmacologic treatments and just mention their names. इसकी details अभी हमारा मुद्दा नहीं है. इसमें है external defibrillation, radiofrequency ablation, implanted defibrillators, pacemakers. All these things are mechanical physical procedures जिसमें आप drugs basically use नहीं कर रहे हैं, कुछ physically कर रहे हैं heart के साथ to stop down and break down the arrhythmias. Okay. So that's all. मुझे बताएं, मुश्किल चैप्टर था. If you read it carefully, particularly by prior understanding of physio,
अगर आपने पहले से फिजियो पढ़ रखा है देन यू शुड बी गुड एंड यू शुड बी एबल टू decipher this chapter very very easily. Otherwise it will be a tough job for you. Okay, so all the very best and आपसे मिलता हूँ फार्मा की अगली किसी वीडियो में बहुत जल्द. अपना ख्याल रखिएगा.